Good morning, student. Welcome you all. So today I'm going to teach you part second of simple present tense or the simple indefinite tense. So in previous part we have seen the structure of the simple present tense and the basic rules of the simple indefinite tense and the definition of the simple present tense. But in this video we will see or we will understand the sentences of the simple indefinite tense and where do we use or where can we use this tense. All right, so let's start. Okay, so present indefinite tense examples, rules and definition. So in this part we'll see the sentences, means affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences and the rules of these sentences. Okay, so in this particular tense, present indefinite tense, affirmative sentence. So in affirmative sentence में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ऑल राइट, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ऑल राइट, एंड रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज. ऑल राइट, सो in simple present tense we always use the first form of the verb. All right, and s or es I already told you where we can use s or es. All right, so with the first means सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमारे जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम एस और एस का यूज नहीं करेंगे, बट विद द थर्ड पर्सन, ऑल राइट, एंड द सिंगुलर सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज द मतलब रूट ऑफ द वर्ब विद एस और es. Okay, so see next sentence, negative. In negative sentence we always use do and does. Do with plural subject and does with singular subject. See the structure or rule: subject plus do or does plus not plus first form of the verb and the remaining sentence, remaining word, okay, or object. So subject is just but whatever the subject. If our subject is singular, then we put does. If our subject is plural, then we will put do. All right, so subject plus do or does and then negative. Sentence is negative, then it's obvious we have to put here not. So not, then first form of the verb and the object. Let's see the interrogative. So interrogative means क्वेश्चन सेंटेंस. ओके, तो जब भी आप क्वेश्चन वाली सेंटेंस बनाएंगे तो ऑलवेज पुट डू और डज फर्स्ट. ऑल राइट, देन सब्जेक्ट. इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन पुट डू, सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन पुट डज. ऑल राइट, सो डू एंड डज, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट रिमूव हो जाएगा बिकॉज इंटरोगेटिव है. ऑल राइट, देन ऑब्जेक्ट. तो एज इट इज सेंटेंस रहेगा, कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं है. नेगेटिव में हम सब्जेक्ट और अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट को पहले पुट करते थे, बट इन इंटरोगेटिव में हम जो डू और डज है उसको पहले पुट करेंगे और सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे. ऑलराइट, सो नाउ विल सी द इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू एंड डज एज इट इज आ जाएगा सब्जेक्ट, बट नॉट पहले आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले एंड ऑब्जेक्ट. And don't forget to put the question mark. It is necessary, essential. All right. Then WH question. What is WH question? Where, which, why. All right. And how. How is also a WH question. All right. So WH word. So WH plus do and does, then subject, then first form of the verb, then object, then question mark. All right. So the sentence, the rule is as it is, means it's just like the other sentences. All right, but in WH sentences we just put WH starting of the sentence. Okay, WH question negative, WH question plus do does plus subject, then put not, then first form of the verb, then object and the question mark. All right, hope you all understand this. Next is see some other sentences or other examples.
So affirmative sentences, I go to school. See here, I. I is subject, right? Go is verb, first form of the verb, alright? And school is object. So I, मैंने आपको बताया था कि I के साथ हम हमेशा जो भी कंडीशन हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं वो भी हम I के साथ यूज करेंगे, राइट? I के साथ हम, जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ मीन जो रूट वर्ब है, रूट वर्ब के साथ हम एस और ईएस पुट नहीं करेंगे, ऑलराइट? तो एज इट इज रूट वर्ब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो आई के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? गो. ऑलराइट, सो आई गो टू स्कूल. लेट्स सी द नेगेटिव. नेगेटिव, आई ऑलवेज काउंट लाइक अ प्लूरल. ओके, वैसे तो सिंगुलर है बट इसमें जो भी रूल्स और लगते हैं वो सब प्लूरल की तरह ही लगते हैं. तो आई के साथ हम हमेशा किसको यूज करेंगे? डू. सो आई डू नॉट गो टू स्कूल. इंटेरोगेटिव, डू आई गो टू स्कूल. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट गो टू स्कूल. WH क्वेश्चन, व्हाई डू आई गो टू स्कूल. एंड WH क्वेश्चन नेगेटिव, व्हाई डू आई नॉट गो टू स्कूल. सपोज अब इधर हम आई की जगह इंस्टेड ऑफ आई विल राइट हियर he. So क्या हो जाएगा? He goes to school. Okay, he does not go to school. Okay, does he go to school? So instead of do हम क्या यूज करेंगे? does. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो. ओके, इन दैट कंडीशन ओनली. Now see where we can use this tense. Okay, so present indefinite tense और present simple हम दोनों इसको बोल सकते हैं. alright, so this tense is used to talk about an habitual, regular and usual action in the present. So as I already told you कि in this tense we will talk about the habitual activities, regular activities, usual activities, permanent activities, universal truth, alright, and some proverbs, okay, that we cannot change it. So this tense is also used to express a universal fact. Let's see the structure: subject, then verb first form, then object, then subject, then first form, s and es, then object. So here the subject is first person and second person, then we put a verb, root of the verb only. If our subject is third person singular, then we put root with the s or es with the root verb. Okay, and object. Now see when to use the simple present tense. So to describe an action that is happening now, तो where we can use जब हम कोई action जो अभी हो रहा है, happening now मतलब अभी हो रहा है, okay, तो उसकी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम simple present tense का use कर रहे हैं. To describe an action, express a habit, repeated action और general truth. और कभी कोई हैबिट मतलब जिस चीज़ के हमारे यूज टू होते हैं उसकी, एंड सम रिपीटेड एक्शन एंड सम जनरल ट्रुथ की हम जब बात करते हैं तो दैट टाइम वी कैन यूज दिस टेंस, मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सपोज आई से हनी इज स्वीट, तो इट्स नेचुरल, हनी है, हनी वो स्वीट होगा ही. ओके, राइट, तो एक जनरल ट्रुथ है, हनी इज स्वीट. सपोज आई से द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. सन ईस्ट से ही राइज होता है, वेस्ट से राइज नहीं होगा, साउथ से राइज नहीं होगा. ऑलराइट, सो दीज आर सम जनरल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ. ऑलराइट, सपोज आई से कि ऑल गोल्ड इज नॉट ग्लिटर, राइट, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. ओके, सो ये क्या है? एक प्रोवर्ब है. ठीक है, तो प्रोवर्ब भी किस में हम यूज करेंगे? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? सी सम एग्जांपल्स. ही ईट्स डिनर. सो इन दिस एग्जांपल, इन दिस सेंटेंस, एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दिस मोमेंट. यहाँ पे बता रहा है वो डिनर खाता है, राइट? तो अभी जो प्रेजेंट मोमेंट पे कोई एक्शन हो रहा है वो एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे. दे ड्रिंक वाटर एवरी डे. Okay, so describing an action which happens habitually, it occurs every day. मतलब ये कोई एक ऐसा एक्शन है जो डेली बेसिस पे हो रहा है. तो they drink water every day. every day आया मीन्स every morning, every day. So जब भी ये कुछ आते हैं, मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स बताए थे, तो जब भी आते हैं मीन्स ये सेंटेंस किससे
बिलोंग कर रहा है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से और सिंपल इंडेफिनिट टेंस से. आई वर्क हार्ड डिस्क्राइब अ जनरल ट्रुथ. क्लियर? सो नाउ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूसेज देखते हैं हम इसमें. फॉर्म एंड एडवर्ब क्या क्या हम यूज कर सकते हैं. लेट्स सी. यूजेस देखिए आप. हैबिट्स एंड रूटीन, जो भी हमारे हैबिट्स हैं और जो भी हमारे डेली रूटीन है इसमें डिस्क्राइब होते हैं. लाइक आई नेवर गो टू द बीच, राइट. ये हैबिट है, ये कि मैं कभी बीच पर नहीं गया, एक रूटीन सा बन गया है. ऑलराइट. देन सी द जनरल ट्रुथ. वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट. जनरल ट्रुथ है. अभी कोई वेजिटेरियन होगा तो वो मीट तो खाएगा नहीं. ऑलराइट. नॉनवेज तो खाएगा नहीं. ना फ्यूचर टाइम टेबल, जो फ्यूचर टाइम टेबल जो ऑलरेडी डिसाइड है. द ट्रेन लीव्स एट 5 PM. ना कुछ फॉर्म्स देख लेते हैं. अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म्स. अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. सो अफर्मेटिव, आई ड्रिंक टी, ही वर्क्स एट होम. Okay, these two sentences are belongs to affirmative sentences. So I drink tea and he works at home. So I के साथ हम drink का use करेंगे, drinks use नहीं करेंगे. He is singular, first person singular. So we use root form of the verb with s. Okay. Negative, I don't drink tea, he doesn't work at home. Interrogative, do you drink tea? You है, second person है, that's why we put here do. He, she or some name hota, then we put here does. So do you drink tea? Then does he work at home? And question mark. So now see adverb. So there are some adverb that we can use or that we can recognize that this sentence belongs to the simple present tense or simple indefinite tense. Like frequency adverb है. Always, usually, often, sometimes, hardly, ever, never. Okay, every day, every morning. ओके. सो ये सारे कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. सो एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ यूज होगा. एडवर्ब आएगा देन मेन वर्ब आएगा. सबसे पहले एडवर्ब आएगा. जैसे सी द एग्जाम्पल. आई इज सब्जेक्ट हेयर. सी, आई इज सब्जेक्ट हेयर एंड यूजुअली. सो यूजुअली इज एडवर्ब एंड ड्रिंक इज मेन वर्ब एंड टी इज ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. सो आई यूजुअली ड्रिंक टी. So he does not usually work at home. Clear? Now some other example. Use simple present tense. Habits, repeated action. She runs in the park every day. तो ये habit है, repeated action है कि वो हर दिन कहाँ पे घूमती है, कहाँ पे भागती है? पार्क में. Alright. So वो used to है इस चीज़ की. Right? She थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर ऑल्सो. तो विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर हम रन के साथ किसका यूज करेंगे? एस का. नाउ विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच यूजुअली गो बिफोर द मेन वर्ब और द आफ्टर ऑफ द मोडाल्स. तो लाइक सी, मैंने अभी भी आपको बताया कि जो भी मोडाल्स हैं और जो भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं उनके जस्ट बाद हम मेन वर्ब का यूज करेंगे. लाइक ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, बैरली, हार्डली, ever, seldom, and many more. So she often goes dancing, right? So she is subject, often is adverb, and goes is main verb, our helping verb, and then dancing. All right. He isn't it often late. See some other examples also. For facts that are always true. Which facts like general truth, universal truth, okay, that we cannot change. Like famous singers earn a lot of money. अब जो भी famous singer होते हैं वो क्या करते हैं? lot of money earn कर सकते हैं. It's truth. ये always true ही रहेगा. For fixed timetable, कुछ fixed timetable होते हैं like the train leaves in 10 minutes and then in time clauses with future meaning. कोई time clauses इसका future meaning आ रहा है. I'll see you when I finish my homework. Okay, मैं मिलता हूँ ठीक है तुमसे जब मैं अपना homework finish कर लूँगा. तो ये ट्रुथ है. मतलब ये फ्यूचर में डिसाइड, मतलब प्रेजेंट में डिसाइड हो चुका है कि उसको फ्यूचर में ये करना है. ऑलराइट. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टेंस परफेक्टली. ओके. सो दिस exercise means simple present tense exercise. You all have to do this exercise by yourself. Okay. So hope you understand. Thank you and stay safe.